गवर्नमेंट सब्सिडीज आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होती जा रही है और से चाइना में बिकने वाली हर 3 गाड़ियों में से एक इलेक्ट्रिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल नुक्ता नजर इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक लाइट ड्यूटी व्हीकल्स की। 2023 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल 14 मिलियन रही, जबकि 2024 में 17 मिलियन गाड़ियां फरोख्त हुई। तमाम फरोख्त होने वाली गाड़ियों का 95% हिस्सा चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में फरोख्त हुआ। गाड़ियों की सेल 2023 में 14 मिलियन रही, जो कि तकरीबन 3.5 मिलियन ज्यादा थी 2022 के मुकाबले में, और 2024 में 17 मिलियन गाड़ियां सेल हुई, जो कि 3.5 मिलियन ज्यादा थी 2023 के मुकाबले में। देखा जाए तो इसकी तरक्की की रफ्तार 35% है। ये रफ्तार 2018 के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। 2023 के डेटा को देखा जाए तो तकरीबन 2.5 लाख नई गाड़ियां हर हफ्ते रजिस्टर्ड होती थी, जो कि 2013 के एनुअल सेल्स के बराबर थी। तो यहां से आप प्रोग्रेस, तरक्की का जो पैमाना है वो तय कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसके अंदर एक्सपेंशन हुई, प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुई और सेल्स हुई। ट्रेंड शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स की को देखकर आपको ये मालूम हो गया होगा कि ग्लोबली सेल तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये सेल कुछ खास रीजन तक महदूद है, जैसे कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट और यूरोप। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि तकरीबन 60% न्यू इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशन चाइना के अंदर हुई, 25% तकरीबन यूरोप में और 10% यूनाइटेड स्टेट में हुई। तो अगर इन 3 रीजन्स के न्यू कार रजिस्ट्रेशंस को देखा जाए तो 95% बनता है। इन तमाम 3 रीजन से हट के बकाया ग्रोथ 5% बचती है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई। और इस डेटा को अगर देखा जाए तो ये बात भी सामने आती है कि 2023 और 24 में चाइना में बिकने वाली हर 3 गाड़ियों में से एक इलेक्ट्रिक थी, जबकि यूरोप में ये तनासब 5-1 का और अमेरिका में 10-1 का तनासब रहा। अगर हम इन ममालिक की इंडिविजुअल ग्रोथ देखें तो चाइना का नंबर उसमें पहला था, जिसमें 8.1 मिलियन गाड़ियां फरोख्त हुई और 35% इजाफा देखने को मिला 2022 के मुकाबले में। और ये साल चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट का सस्टेनेबिलिटी का साल भी रहा। इस साल में जितनी भी गाड़ियां फरोख्त हुई वो बगैर किसी गवर्नमेंट सब्सिडीज के फरोख्त हुई। गवर्नमेंट ने 10 साल तक सब्सिडाइज इसको रखा ताकि ये मार्केट सेगमेंट ग्रो कर सके, और 2023 इसका पहला साल था जिसमें कोई सब्सिडी नहीं थी, और जितनी भी गाड़ियां फरोख्त हुई वो फरोख्त हुई अपनी क्वालिटी, इंतहाई अच्छे फीचर्स और ग्लोबल तनासब में ट्रेंड्स चेंज होता देखकर चाइनीज कंज्यूमर ने 8.1 मिलियन गाड़ियां परचेज की। रोबस्ट ग्रोथ से न कि सिर्फ चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की लैंडस्केप तब्दील हो रही है, जबकि चाइना की एक्सपोर्ट भी ज्यादा होती जा रही है। 2023 में 4 मिलियन गाड़ियां एक्सपोर्ट कर चुका है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद 1.2 मिलियन है। गाड़ियों की एक्सपोर्ट का ये तनासब 65% ज्यादा है 2022 के मुकाबले में, और कार एक्सपोर्ट तकरीबन 80% ज्यादा हुई। चाइना की मेन एक्सपोर्ट मार्केट यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन्स की कंट्री रही, जैसे कि थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 1.4 मिलियन रही, जो कि 2022 के मुकाबले में 40% ज्यादा है। अमेरिका में कार लीजिंग पॉलिसी और क्लीन व्हीकल टैक्स क्रेडिट जैसे ऑप्शन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, जैसे कि टेस्ला मॉडल वाई की सेल 50% 2022 के मुकाबले में ज्यादा रही, क्योंकि उसके ऊपर फुल क्रेडिट टैक्स क्रेडिट USD $7,500 आपको मिल जाता था। अगर अब यूरोप को देखा जाए तो न्यू इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशन तकरीबन 3.2 मिलियन हुई 2023 में, और ग्रोथ रेट तकरीबन 20% रहा 2022 के मुकाबले में। चाइना की तरह यूरोप में भी बहुत ज्यादा सेल देखने में आई। मिसाल के तौर पर जर्मनी तीसरा बड़ा मुल्क बन गया चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद, जो कि तकरीबन 500,000 नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हुई। गवर्नमेंट सब्सिडीज आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होती जा रही है और सेल में उतार चढ़ाव यूरोप में चल रहा है, लेकिन ग्रोथ बतदरीज देखने को मिल रही है। जैसा कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में 30% गाड़ियों की जो सेल थी वो इलेक्ट्रिक कार्स की थी। नीदरलैंड में 30%, जबकि स्वीडन में 60% रही। नॉर्वे, जो यूरोप का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कैपिटल समझा जाता है, उसमें तमाम यूरोप से ज्यादा शेयर होल्डर है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ट्रांजिशन में, जिसका तनासब तकरीबन 95% रहा।
अब हम बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की, जो कि साउथ ईस्ट एशिया और ब्राजील हैं। इलेक्ट्रिक कार की जो मार्केट है साउथ ईस्ट एशिया में कम रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों की जी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रिक कार कम, जबकि 2-3 व्हीलर्स, वैन और मिनी बसेस ज्यादा हैं। अब इन रीजन्स को अगर टैप करना है तो 2 से 3 व्हीलर गाड़ियों की इलेक्ट्रिफिकेशन, मिनी बसेस और वैन्स की इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है, और साथ साथ में गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां हैं उसकी भी फेज आउट ट्रांजिशन होगी। Now let's discuss India. In India, electric car registration were up to 70% year-on-year to 80,000 compared to a growth rate of under 10% for total car sale. Around 2% of all cars sold were electric. Purchase incentive under the Foster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicle Scheme, supply side incentive under the Production Link Incentive Scheme, tax benefit and the Geo Electric campaign have all contributed to fostering demand in recent years. A number of new models also became popular in 2023, such as Mahindra XUV 400 and MG Comet. Local car makers have thus far maintained a strong foothold in the market, supported by advantageous import tariff, and account for 80% of electric car sales in cumulative term since 2010, led by Tata 70% and Mahindra 10%. Now let's talk about Thailand. Electric car registration more than 4 times year to year to nearly 90,000, reaching a notable 10% sale share, comparable to the share in the United States. This is also the more impressive given that overall car sale in the country decreased from 2022 to 2023. But there are new subsidies, including for domestic battery manufacturing and lower import and excise taxes, combined with the growing presence of Chinese car makers, have contributed to rapidly increasing sale. Chinese companies account for over half these sales to date, and they could become even more prominent. Given that BYD plans to start operating EV production facility in Thailand in 2024 with an annual production capacity of around 150,000 vehicles for investment of just under USD 500 million. And now what Thailand is doing, Thailand aims to become a major EV manufacturing hub for domestic and export market, and is aimed to attract USD 28 billion in foreign investment within 4 years, backed by specific incentive to foster investment. वियतनाम में 2022 में कार की फरोख्त के लिए एक बेहतरीन मार्केट रही, लेकिन 2023 में कार्स की मार्केट 25% की कमी देखने में आई, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की सेल में रिकॉर्ड ग्रोथ देखने में आई। 2021 में सिर्फ 100 गाड़ियां थी, 2022 में 7,000, जबकि 2023 में तकरीबन 30,000 टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद पहुंच गई, और इसका शेयर 15% बनता है। वियतनाम की डोमेस्टिक कंपनी जिसका नाम विनफास्ट है 2017 में बनी, और तकरीबन तमाम डोमेस्टिक सेल इस कंपनी ने की। विनफास्ट कंपनी 2023 से अमेरिका की मार्केट में भी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल बेच रही है, और साथ साथ ही मुल्क में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि उसमें सब्सिडीज हैं, और इस तरीके से वो अपनी ग्रोथ को मजीद तकवीत देगी। ये कंपनी अपने मुल्क में तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि 1.5 लाख गाड़ियां बनाएगी यूनाइटेड स्टेट में 2025 तक। 2023 में ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी इनलिस्ट हो गई, और डुअल मार्केट वैल्यूएशन इसको मिली जो कि तकरीबन $85 बिलियन है। विनफास्ट कंपनी की नजरें जो रीजनल मार्केट हैं करीबी ममालिक जैसे कि इंडिया और फिलीपींस के ऊपर भी है। मलेशिया में इलेक्ट्रिक कार की रजिस्ट्रेशन 10,000 तक पहुंच गई, और इसका क्रेडिट जाता है टैक्स सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन को। इसके साथ साथ मलेशिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क में फैला दिया है, और 2023 में मर्सिडीज बेंज ने पहली डोमेस्टिकली असेंबल ईवी यहां पे मार्केट की, जबकि BYD और टेस्ला भी इस मार्केट में एंटर हो चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन लैटिन अमेरिका। कार सेल्स रीच ऑलमोस्ट 90,000 in 2023 with markets in Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico
Mexico are the leading region. In Brazil, electric car registration nearly tripled year to year to more than 50,000 trucks, a market share of 3%. Growth in Brazil was underpinned by the entry of Chinese car makers such as BYD with its Song and Dolphin model. What will be the takeaway for Brazil for the massive electrification? That is that the road transport with electrification in Brazil could bring significant climate benefit given the largely low emission power max as well as reducing local air pollution. However, EV adoption has been slow thus far given the national prioritization of ethanol-based fuel since the late 1970s as a strategy to maintain energy security in the face of oil shock. Today, biofuel are imported alternative fuel available at competitive cost and aligned with the existing refueling infrastructure. Brazil remains the world's largest producer of sugarcane and its agribusiness represents about one-fourth of GDP. At the end of 2023, Brazil launched the Green Mobility and Innovation Program, which provide tax incentive for the companies to develop and manufacture low-emission road transport technology, aggregating to more than BRA 19 billion USD, that is equal to USD $3.8 billion over the 2024 to 2028 period. Several major car makers already in Brazil are developing hybrid ethanol electric model as a result. China, BYD and Great Wall are also planning to start domestic manufacturing counting on local battery metal deposit and plan to sell both fully electric and hybrid ethanol electric models. BYD is investing over USD 600 million in its electric car plant in Brazil, its first outside Asia, for an annual capacity of around 150,000 vehicles. BYD also partnered with Reason to develop charging infrastructure in 8 Brazilian cities starting in 2024. General Motors, its competitor from North America, on the other hand, plan to stop producing ICE, including ethanol models, and go fully electric. Why? Because to produce for more export. In 2024, Hyundai announced investment of 1.1 billion USD to 2022 to 2032 to start local manufacturing of electric hybrid and hydrogen car. You can see how the competition is getting tough. In Mexico, another South American country, electric car registration were up to 80% year on year to 15,000, a market share just above 1%. It is very close to United States. Mexico automotive market is already well integrated with North American partner and benefit from the advantageous trade agreement, large existing manufacturing capacity and eligibility for subsidies under the IRA. As a result, local EV supply chain are developing quickly with expectation that this will spill over into domestic market. Tesla, Ford, Stellantis, BMW, GM, Volkswagen and Audi have all either started manufacturing or announced plan to manufacture EVs in Mexico. Now, let's see what Chinese are doing in Mexico. Chinese car makers such as BYD, Chery, and SAIC are also considering expanding to Mexico. Elsewhere in the region, Colombia and Costa Rica are seeing increasing electric car sale with around 6,000 to 5,000 in 2023, respectively, but sale remain limited in other Central and South American countries. If we talk about Africa, Eurasia, and Middle East, electric cars are still very rare, accounting for less than 1% of total car sale. However, as Chinese car makers look for opportunities abroad, new models, including those produced domestically, could boost EV sale. For example, in Uzbekistan, BYD set up a joint venture with Uz Automotor in 2023 to produce 50,000 electric cars annually, and Chery International established a partnership with ADM Jizak. This partnership has already led to steep increase in electric car sale in Uzbekistan, reaching around 10,000 in 2023. In the Middle East, Jordan boasts the highest electric sale share at more than 45%, supported by much lower import duties relative to ICE car, followed by the United Arab Emirates with
with only 13%. अब आते हैं इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2024 के पहले क्वार्टर की सेल्स की। 2024 का पहला क्वार्टर 25% ज्यादा कार सेल देखने में आई 2023 के इसी क्वार्टर में, और आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा मुल्क कहां पे लाए करता है। हमेशा की तरह चाइना ईवी की प्रोडक्शन सेल में नंबर 1 पे, यूरोप कॉन्टिनेंट नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट नंबर 3 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 4th नंबर पे रहा। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि तकरीबन 2022 से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का शेयर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मॉडल्स की अवेलेबिलिटी और इसके ट्रेंड की। इसका ट्रेंड तो वाज़ेह तौर पर झुकाव करता है बड़ी गाड़ियों की तरफ। अभी तक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार मॉडल्स अवेलेबल हैं वो 600 हैं, इसमें 2/3 एसयूवीज हैं। 2023 में नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रिक कार के जो मॉडल्स हैं वो 15% इंक्रीज हुआ और 590 तक पहुंच गए। ये इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचना चाह रहे हैं, इसलिए इस मॉडल्स की अवेलेबिलिटी में काफी रुझान चल रहा है। इसके तनाजुर में अगर देखा जाए कि इंटरनल कंबस्टन इंजन, तो इंटरनल कंबस्टन इंजन व्हीकल तकरीबन 2% के हिसाब से कम हुई है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये अनाउंस कर रहे हैं कि 2028 तक तकरीबन 1000 इलेक्ट्रिक कार्स के मॉडल अवेलेबल होंगे। तो अगर इसी तनासुब से इंटरनल कंबस्टन इंजन कम हो रहे हैं यानी 2% के हिसाब से और इलेक्ट्रिक कार मॉडल्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये बात देखने में आ रही है कि 2028 या 2030 तक तकरीबन इलेक्ट्रिक कार और इंटरनल कंबस्टन इंजन ड्रिवन कार की तादाद सेम हो जाएगी। गिवो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल कार्स का शेयर इलेक्ट्रिक मॉडल्स में कम होता जा रहा है। 2023 में सेल होने वाले ज्यादातर गाड़ियां बड़ी गाड़ियां थी, यानी कि एसयूवीज, पिकअप ट्रक्स और लार्ज कार्स। अमेरिका में बिकने वाली छोटी गाड़ियों की तादाद 25% थी, यूरोप में 40% और चाइना में 50%। इलेक्ट्रिक कार्स में भी वही ट्रेंड देखने को आ रहा है जो हम देखते आ रहे हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन में, यानी गाड़ी बड़ी हो, डैशिंग हो, और यही किस्म के ट्रेंड इनमें चल रहे हैं। लार्ज कार मॉडल्स की डिमांड ने मुतासिर किया है बैटरी की सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड को। 2023 में सेल वेटेड एवरेज बैटरी इलेक्ट्रिक एसयूवी यूरोप में बैटरी की जो तादाद थी वो तकरीबन डबल थी बनिस्बत छोटी गाड़ियों के। अगर इसको देखा जाए तो एसयूवी की बैटरी 25% ज्यादा बड़ी होती है इलेक्ट्रिक कार जो कि स्मॉल और मीडियम रेंज की हो। आजकल के ग्लोबल ट्रेंड के मुताबिक और जो सेल डेटा है उसमें तकरीबन दुनिया भर में 6000 टन लिथियम, 30,000 टन निकल और 70,000 टन कोबाल्ट और तकरीबन 80,000 टन मैग्नीज की जरूरत होगी कि मुस्तकबिल में इन मिनरल्स की तलाश और इसकी माइनिंग काफी परवान चढ़ेगी और जहां जहां पे ये दस्तयाब है वहां पे कारोबारी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। बैटरीज के अंदर मैग्नीज इस्तेमाल होता है तो इसका लॉन्गर चार्जिंग टाइम है। इसका इम्पैक्ट ग्रिड स्टेशंस के ऊपर पड़ेगा और स्पेशली जब पीक आवर्स चल रहे होते हैं तो उस सूरत हाल में बिजली की कैपेसिटी को, सप्लाई को पूरा रखना एक चैलेंजिंग होगा, स्पेशली उन कंट्रीज में जो डेवलपिंग हो। लोगों का ये शिफ्ट टुवर्ड्स एसयूवीज और लार्जर इलेक्ट्रिक कार की कंजम्पशंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तकरीबन एसयूवीज और लार्जर इलेक्ट्रिक कार 20% ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल और मीडियम इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार बनाने की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये अनाउंस किया था कि वो छोटे और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार मॉडल बनाएंगे आने वाले सालों में, जबकि अगर हकीकत देखी जाए और लोगों के ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर ज्यादा मॉडल्स बना रहे हैं एसयूवीज और लार्जर इलेक्ट्रिक कार्स के, और ये एक अंदाजे के मुताबिक 25% ज्यादा मॉडल बना रहे हैं एज कंपेयर टू स्मॉल और मीडियम ड्यूटी इलेक्ट्रिक कार्स के। लार्जर इलेक्ट्रिक कार्स की सेल को और उसकी डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है स्मॉलर और लाइटर वेट पैसेंजर्स कार के लिए। मिसाल के तौर पर नॉर्वे में तो पहली ही टैक्स एग्जेम्पशन है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, लेकिन उन्होंने ये एक पॉलिसी मुतारिफ की है कि 500 केजी से जो भी गाड़ी का वेट ज्यादा होगा उसके ऊपर पर केजी के हिसाब से कुछ एडिशनल फी या ड्यूटी देनी होगी। फ्रांस में टैक्स की इतलाक इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और उन गाड़ियों के लिए बिलखुसूस जो 1600 किलो से ज्यादा है। अंदाजा आप एक मिसाल से ले सकते हैं कि लैंड रोवर डिफेंडर है जिसका वजन 2550 केजी है, उसके ऊपर टैक्स है 21,500 यूरो, जबकि उसके मुकाबले में एक रेनॉल्ट क्लायो
गाड़ी है जिसका वजन 1100 केजी है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो मुमालिक भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर गाड़ी की वजन ज्यादा होगा, जिसमें बैटरी का वजन सबसे ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत ज्यादा होगी और इस एक्सपेंशंस को मैनेज करना काफी मुश्किल होगा। फरवरी 2024 में एक रेफरेंडम हुआ पेरिस में, जिसमें ये बात फैसला हुआ कि जो सिटी की पार्किंग फीस है वो तकरीबन ट्रिपल कर दी जाएगी एसयूवीज के लिए, जो कि एप्लीकेबल होगी इंटरनल कंबस्टन इंजन, हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड कार्स के ऊपर, जिसका वजन 1600 केजी से ज्यादा होगा, और बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो 2000 केजी से ज्यादा होगी। बहुत से ममालिक अपने मुल्क की जरूरियात के मुताबिक डिफरेंट किस्म के टैक्स स्ट्रक्चर मुतारिफ करा रहे हैं, जैसे कम वेट के लिए कम इंपोर्ट टैक्स, फ्री रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी दीगर चीजें भी कर रहे हैं। और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग की कैपेसिटी है, जो कि पर यूनिट चार्ज है, उसके ऊपर भी वो कम पैसों का इतलाक कर रहे हैं उन गाड़ियों की बनिस्बत जो हैवी हैं। Now let's talk about the battery technology improvement and vehicle design. The sale weighted average range of battery electric car grew by nearly 75% between 2015 and 2023. Although trends vary by segment, the average range of small car in 2023, around 150 km, is not much higher than it was in 2015, indicating that this range is already well suited for urban use, with the exception of taxis which have much higher daily usage. Large, higher-end models already offered higher ranges than average in 2015, and their range has stagnated through 2023, average around 360 to 380 km. Meanwhile, significant improvements have been made for medium-sized car and SUVs, the range of which now stand around 380 km, whereas it averaged around 150 km for medium cars and 270 km for SUVs in 2015. This is encouraging for consumer looking to purchase an electric car for longer journey rather than urban use. Since 2020, growth in the average range of vehicle has been slower than over 2015 to 2020. This could be from a large number of factors, including fluctuating battery prices, car makers' attempt to limit additional cost as competition intensifies. Also due to technical constraint arises from energy density, battery size. It could also reflect that beyond a certain range at which most driving needs are met, consumer willingness to pay for a marginal increase in battery size and range is limited. Looking forward, however, the average range could start increasing again as novel battery technology mature and prices fall. If we look into the market, it can be easily identified that more affordable electric car models are required to reach the mass market tipping point. For equitable and inclusive transition to electric mobility, both within countries and the global level, hinges on the successful launch of affordable EVs. In this section, we use historic sale and prices data for electric and ICE models around the world to examine the total cost of owning an electric car price, trend over time, and the remaining electric premium by country and vehicle size. Let's discuss this graph to understand the total cost of ownership. Car purchase decisions typically involve consideration of retail price and available subsidies, as well as lifetime operating cost, such as fuel cost, insurance, maintenance, and depreciation, which together make up the total cost of ownership, that is TCO. Reaching TCO parity between electric and ICE car create important financial incentive to make the switch. This section examines the different component of the TCO by region and car size. In 2023, upfront retail prices for electric car were generally higher than for their ICE equivalent, which increased their TCO in relative terms. On the upside, higher fuel efficiency and lower maintenance cost enable fuel cost saving for electric cars, lowering their TCO. This is typically true in periods when fuel prices are high, in places where electricity prices are too closely correlated to fossil fuel prices. Depreciation is also a major factor in determining TCO. As a car ages, it loses value, and depreciation for electric car
tend to be faster than for the ICE equivalent, further increasing their TCO. Accelerated depreciation could, however, prove beneficial for the development of second-hand market. However, the trend towards faster depreciation for electric vehicle might be reversed for multiple reasons. Number one, consumers are gaining more confidence in electric battery lifetime, therefore increasing the resale value of EVs. Number two, strong demand and the positive brand image of some BEV models can mean they hold their value longer, as shown by the Tesla model depreciating more slowly than average petrol car in the United States. Finally, increasing fuel prices in some region, the rollout of low emission zone that restrict access for the most polluting vehicle and taxes and parking fee specifically targeted at ICE vehicles could mean they experience faster depreciation rates than EV in the future. In light of these two possible opposing depreciation trends, the same fixed annual depreciation rate for both battery electric vehicle and internal combustion engine vehicle has been applied in the following cost of ownership analysis. Thing that is more contributing to help lower the TCO of electric vehicle relative to ICE equivalent in multiple ways. A purchase subsidy lower the original retail price, thereby lowering capital depreciation over time, and a lower retail price implies lower financial costs through cumulative interest. Subsidies can significantly reduce the number of years required to reach TCO parity between electric and ICE equivalent. As of 2022, we estimate that TCO parity could be reached in most cases in under 7 years in the three major EV market, with significant variation across different car sizes. In comparison, for model purchase at 2018 prices, TCO parity was much harder to achieve. In Germany, for example, we estimate that the sale weighted average price of a medium-sized battery electric car in 2022 was 10 to 20% more expensive than its ICE equivalent, but 10 to 20% cheaper in cumulative cost of ownership after 5 years, thanks to fuel and maintenance cost saving. In case of an electric SUV, we estimate that the average annual operating cost saving would amount to USD 1800 when compared to the equivalent conventional SUV over a period of 10 years. In the United States, despite lower fuel prices with respect to electricity, the higher average annual mileage results in savings that are close to Germany at USD 1600 per year. In China, lower annual distance driven reduces fuel cost saving potential, but the very low price of electricity enables saving of about USD $1,000 per year. These figures provide an indication of how long it will take to recoup the initial purchase price gap between a BEV and its equivalent ICE EV through operating cost saving. Survey conducted, some electric car can be more cheaper than the internal combustion engine car in the whole lifetime. This is true in India, for example, although it depends on the financing instrument. Access to finance is typically much more challenging due to higher cost, interest rate, and more limited availability of cheap capital. Passenger cars have a significantly lower market penetration in the marketplace, and many car purchases are made in the second-hand market. If we discuss the retail price parity, electric cars are generally getting cheaper as battery prices drop, competition intensify, and car makers achieve economies of scale. In most cases, however, they remain on average more expensive than internal combustion engine equivalent. In some cases, after adjusting for inflation, their prices stagnated or even moderately increased between 2018 and 2022. In China, where the sale share of electric car has been high for several years, the sale weighted average price for electric cars before purchase subsidy is already lower than the internal combustion engine car. This is true not only when looking at total sale, but also at the small car segment and is close for SUVs. After accounting for EV exemption from the 10% vehicle purchase tax, electric SUVs were already on par with conventional one in 2022 on average. Electric car prices have dropped significantly since 2018.
we estimate that around 55% of electric cars sold in China in 2022 were cheaper than their average ICE equivalent, up from under 10% in 2018. Given the, given the further price decline between 2022 and 2023, we estimate that this share increased to around 65% in 2023. This encouraging trend suggests that the price parity between electric and ICE car could be reached in other countries in certain segments by 2030. If the sales share of electric cars continue to grow and if supporting infrastructure such as charging is sustained, definitely we will see a tremendous decrease in prices in comparison to internal combustion engine. इंटरनल कंबस्टन इंजन गाड़ियों की प्राइसेस, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्राइसेस कहां पे है, इसके बारे में चाइना का एक बेहतरीन डेटा आपके सामने रखते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो 2018 और 2022 का ये कंपैरिजन है छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों के दरमियान फर्क। अगर आप देखें कि 2018 में तकरीबन 10% प्राइस जो है वो थी, यानी कि इलेक्ट्रिक कार 90% ज्यादा महंगी थी उसके इक्विवेलेंट इंटरनल कंबस्टन इंजन के। लेकिन अगर आप देखें 2022 में एक मैसिव शिफ्ट आया कि 90% ज्यादा सस्ती हैं इलेक्ट्रिक कार स्मॉल बनिस्बते इक्विवेलेंट इंटरनल कंबस्टन इंजन कार के। ट्रेंड अगर आप देखें मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स में तो 2018 में तकरीबन इलेक्ट्रिक गाड़ी मीडियम रेंज की 90% ज्यादा महंगी थी उसके इक्विवेलेंट आईसीई के, जबकि 2022 में तकरीबन 60% ज्यादा महंगी है आईसीई इक्विवेलेंट के। और अगर हम ये ट्रेंड देखें एसयूवी में तो 2018 में तकरीबन 60% ज्यादा महंगी थी उसकी इक्विवेलेंट आईसीई, जबकि 2022 में तकरीबन 50% महंगी है उसकी आईसीई इक्विवेलेंट। और अगर हम एक तमाम गाड़ियों का इन तमाम सेगमेंट का एक ट्रेंड देखें तो 2018 में तकरीबन आईसीई इक्विवेलेंट गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल से तकरीबन 80% सस्ती थी, जबकि 2022 में तकरीबन ये बराबर आ गई हैं कि आईसीई इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे वो स्मॉल मीडियम रेंज एसयूवी हो उनकी प्राइस में तकरीबन पैरिटी आ गई है। Let's look into the United States. The sale weighted average price of electric car decreased over the 2018 and 2022 period, primarily driven by considerable drop in the price of Tesla car, which account for a significant share of sale. The sale weighted average retail price of electric SUV fell slightly more quickly than the average SUV battery cost over the same period. The average price of small and medium models also decreased, albeit to a smaller extent. Across all segments, electric models remain more expensive than conventional equivalent in 2022. However, the gap has since begun to close as market increases and competition leads car maker to cut prices. For example, in 2023 to 2024, Tesla Model 3 could be found in the USD $39,000 to USD $42,000 range, which is comparable to the average price for new ICE car and a new Model Y, priced under USD $50,000, which was launched. Rivian is expecting to launch its R2 SUV in 2026 at USD $45,000, which is much less than the previous vehicle. Now let's see that the average price parity between electric and conventional SUV could be reached by 2030. But it may only be reached later for small and medium car given their lower availability and popularity. Small, cheaper electric model have further to go to reach price parity in the United States. We estimate that in 2022, only about 5% of the electric cars sold in the United States were cheaper than the average ICE equivalent. In 2023, the cheapest electric car were priced around $30,000. To compare, best-selling small ICE option cost under $20,000, and many best-selling medium ICE option between USD $20,000 and $25,000. Around 25 new electric car models are expected in 2024 and 2025, but only 5% of them are expected below
$50,000 and none under the USD $30,000 mark. Considering all the electric model expected to be available in 2024 and 25, about 75% are priced above 50,000 US dollar and fewer than 10 under $40,000. Even after taking into account the 7,500 tax credit under the IRA for eligible car as of February 2024, this means that despite tax credit, few electric car model directly compete with small mass market ICE models. अब बात करते हैं यूरोप में प्राइस डिफरेंसेस के हवाले से। यूरोप में प्राइस डिफरेंसेस का फॉर्मेट एक जैसा नहीं है, मुल्कों के हवाले से भी मुख्तलिफ है और सेगमेंट के हवाले से भी मुख्तलिफ है। नॉर्वे में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल टैक्स एग्जेम्पशन देखें तो इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी चीपर हैं अपने आईसीई इक्विवेलेंट से तमाम सेगमेंट में। 2022 से अब तक तकरीबन इलेक्ट्रिक प्रीमियम -15% रहा स्मॉल गाड़ियों पर और -30% रहा मीडियम साइज कार पर। आज से ठीक 5 साल पहले तकरीबन 2018 में जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक प्रीमियम था वो कम एडवांटेजियस था और तकरीबन था -5% के करीब। अब अगर हम बात करें जर्मनी की तो 2022 में जो 40% गाड़ियां इलेक्ट्रिक सोल्ड हुई वो कम प्राइसेस पे थी उसके इक्विवेलेंट इंटरनल कंबस्टन इंजन गाड़ियों के। और अगर हम बात करें एज अ होल तो तकरीबन 25% कार जो सोल्ड हुई हैं इलेक्ट्रिक कार 2022 से 2024 में वो कम प्राइस थी उसके इक्विवेलेंट इंटरनल कंबस्टन इंजन गाड़ी के। इसको समझने के लिए हम एक कंपैरिजन करते हैं जर्मनी में, जहां पे फेमस मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स जो कि MG4, डैशिया स्प्रिंग, रेनॉल्ट मैग्नी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, वो कहीं गुना ज्यादा चीपर थी उसके इक्विवेलेंट आईसीई मॉडल जो कि है ऑडी 3, ऑडी 4, लॉरा और दूसरी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्राइस तकरीबन $22,000 से $35,000 थी, जबकि उसके जो इक्विवेलेंट मीडियम ड्यूटी आईसीई इंजन के साथ गाड़ियां हैं उनकी प्राइसेस तकरीबन $30,000 से $50,000 के दरमियान रिकॉर्ड की गई। Now let's see the price comparison between ICE and electric equivalent in France. The sale weighted average electric premium stagnated between 2018 and 2022. The average price of ICE car also increased over the same period, though many moderately than that of electric model. Despite a drop in the price of electric SUVs, which stood at 30% premium or ICE equivalent in 2022, the former do not account for a high enough share of total electric car sale to drive down the overall average. The electric premium for small and medium cars remain around 40 to 50%. In 2023, the cheapest electric car in France were priced between $22,000 to $30,000. While best-selling small ICE model were available between Euro 10,000 and Euro 20,000. This means that in France, the price comparison is a bit out of proportion. The ICE cars are better in price than its electric equivalent. In 2023, now we are talking about the United Kingdom. The cheapest electric car were priced from 27,000 to 30,000 pounds. With exception of the Smart EQ42 price at 21,000 pounds. To compare, best-selling small ICE option could be found from 10,000 to 17,000 pounds, and medium option between 25,000 pounds. Since July 2022, there has been no subsidy for the purchase of electric passenger. Here in UK, we can say that the ICE car are available at prices with little better than its equivalent electric car models. Elsewhere in Europe, electric cars remain typically much more expensive than ICE equivalents. अब बात करते हैं जापान में, जो कि एक एडवांस इकोनॉमी है और वहां पे छोटी कारें इलेक्ट्रिक या पेट्रोल दोनों ही आवाम पसंद करते हैं और दोनों की सेल्स बहुत अच्छी रही। लेकिन अगर आप प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो जो छोटी गाड़ी है निसान सकुरा और मित्सुबिशी EKX वो तकरीबन नेशनल कार सेल की 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है। लेकिन अगर आप प्राइसेस को देखें तो इसकी प्राइस तकरीबन 2.3 मिलियन जापानीज येन
से 3 मिलियन जापानीज येन तक जाती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है उसके राइवल या इक्विवेलेंट आईसीई मॉडल जैसे कि होंडा एनबॉक्स, डायहाट्सू हाईजेट, डायहाट्सू टेंट्रो, सुजुकी स्पेशिया, डायहाट्सू मूव, जिनकी प्राइसेस तकरीबन 13,000 से 18,000 यूएस डॉलर में बनती है। जापानीज कार मेकर निसान ने ये अनाउंस किया है कि इनका मकसद है, इनका टारगेट है कि 2030 तक प्रोडक्शन प्राइसेस जो है इलेक्ट्रिक कार की और आईसीई कार्स की बराबर लाई जाए। इफ वी टॉक अबाउट द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमीज in India, for example, where Tata small Tiago model, which are priced between $10,000 to $15,000, accounted for about 20% of total electric car sale in 2023. The average best-selling small ICE car is priced around USD $7,000. Large model and SUV accounted for over 65% of total electric car sale. While BYD announced in 2023 the goal of accounting for 40% of India EV market by 2030, of all its model available in India cost more than Indian 3 million rupees, including the Seal launched in 2024 for 4.1 million Indian rupees. The price comparison is very challenging because in the developing countries, the mode of transport for passenger is not all about electric cars, but minivans and minibuses. Southeast Asia countries like Thailand, Vietnam, Malaysia, and Indonesia, the price parity is equalizing to the ICEE, thanks to the Chinese automaker, which are not only trading and exporting the electric car to these market, but also making huge investment to make the local availability, local manufacturing base in these country for domestic and international market. आइए हम अभी अब नजर डालते हैं कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो गाड़ियां फरोख्त होती हैं उसमें डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर्स की कितनी अमाउंट है और चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी इस्तेमाल होती हैं। पहले अगर हम इंडिया में बात करें तो तकरीबन जो 20% शेयर है इलेक्ट्रिक कार सेल्स में वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का है। तुर्की में ये परसेंटेज तकरीबन कोई 10% है, लेकिन आप जब थाईलैंड, ब्राजील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, मलेशिया की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 70% तक जो गाड़ियां फरोख्त होती हैं इलेक्ट्रिक वो मेड इन चाइना है। और इसके हवाले से अगर हम दूसरे कंपटीटर देखें चाइनीज ऑटोमेकर के तो वो तकरीबन 10 to 20% कहीं पे और कहीं पे 10 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉम्पिटिशन्स को, पॉपुलेशंस को। से ये अंदाजा होता है कि चाइनीज ऑटोमेकर ग्लोबली और इस रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखते हैं और सबसे ज्यादा गाड़ियां चाइनीज ऑटोमेकर्स की सेल होती हैं। आईसीई व्हीकल की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट भी काफी मैच्योर होती जा रही है और दुनिया भर में सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार्स को खरीदा जाता है थैंक्स टू द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि अब बहुत लंबे टाइम के बाद इसकी जो चार्जिंग साइकिल है वो ज्यादा हो गए हैं। इस वजह से जो बैटरी की वैल्यू है वो इतनी जल्दी डिक्रीज नहीं होती। एक अंदाजे के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के शहरी तकरीबन 8 में से 10 में से 8 गाड़ियां यूज्ड खरीदते हैं और ये परसेंटेज 90% से ज्यादा है उन लोगों में जो लो या मिडिल इनकम के लोग हैं। अमेरिका में भी तकरीबन 10 में से 7 गाड़ियां सेकंड हैंड खरीदी जाती हैं और 17% लोग ही जो लो इनकम है या मिडिल इनकम है वो न्यू कार परचेज करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो रिलायबिलिटी है इलेक्ट्रिक कार की वो बहुत बेहतरीन हो गई है, जो लीड कर रही है सेकंड हैंड मार्केट को। एक अंदाजे के मुताबिक 2023 में तकरीबन 8 लाख गाड़ियां चाइना में अवेलेबल थी सेल के लिए, 40,000 गाड़ियां, 4 लाख गाड़ियां यूनाइटेड स्टेट में, जबकि 4,50,000 गाड़ियां फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को मिलाकर सेल हुई। एक डेटा के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में पुरानी गाड़ियां उतनी ही परचेज लोगों ने की जितने की नई गाड़ियां, यानी कि नई गाड़ियों की परचेज और पुरानी गाड़ियों की परचेज तकरीबन इक्वल है, जो कि ये शो करती है कि मार्केट मैच्योर हो रही है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक कार मार्केट के लिए।
और इसका एक फायदा ये भी हो रहा है कि सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार ज्यादा सूट करती है आईसीई इक्विवेलेंट को। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईसीई कार को compete करेगी, जबकि सेकंड हैंड कार उससे बेहतर प्राइस पे मिलेगी। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरोप। इन recent year, the resale value of electric car has been increasing in Europe. The resale value of battery electric car sold after 12 months has steadily increased over the 2017 to 2022 period, surpassing that all of other powertrain and standing at more than 70% in mid-2022. The resale value of battery electric cars sold after 36 months stood below 40% in 2017, but has since been closing the gap with other powertrain, reaching around 55% in mid-2022. Companies are also contributing to the sale of second-hand electric vehicles because they own large volume of vehicle for shorter period, under 3 years compared to 3 to 5 years for private household. Their impact on market for new car can also be considerable. Leasing company accounted for over 20% of new cars sold in Europe in 2022. हम अगर यूज कार की मार्केट को देखें तो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी और इंक्रीज करेगी उन मार्केट्स में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है। जो ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक दुनिया भर में इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा कि वो ग्लोबली एक्सपोर्ट होंगी। इसके ऊपर इतना ज्यादा डाटा तो अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो ज्यादातर कॉन्ट्रीडिक्टरी है, लेकिन इसमें हमें जो आईसीई कार्स का मॉडल है वही तकरीबन फॉलो होता है। और इसमें इस ट्रेंड को देखते हुए हमें ये अंदाजा होता है कि अफ्रीका में दुनिया भर का 40% यूज कार या ट्रक्स इंपोर्ट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में। और ये फ्लो तकरीबन इस तरीके से होता है कि मगरबी यूरोप से ये जाता है मशरकी यूरोप, और वहां से अफ्रीकन कंट्रीज को जाता है। जापान एशिया में को बेचता है और अफ्रीकन कंट्रीज को भी लेफ्ट हैंड साइड की गाड़ियां बेचता है, और यूनाइटेड स्टेट और सेंट्रल अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ ये ट्रेड होती है। इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट का भी यही ट्रेंड होगा, क्योंकि दुनिया में अब जो बेसिस बन रही हैं वो यूरोपीय यूनियन, चाइना और अमेरिका। तो चाइना से अफ्रीका और बाकी तमाम ममालिक में भी जाएंगे, और यूरोप से भी इन्हीं तरीके से ट्रेड फ्लो करेगा टुवर्ड्स अफ्रीका एंड टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। इससे फायदा ये होगा कि जो लोग इलेक्ट्रिक कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते या इलेक्ट्रिक कार्स वहां पे प्रॉपरली मार्केट नहीं होती, तो वो लोग भी कम कीमत होने की वजह से इन कंपैरिजन टू आईसीई इक्विवेलेंट लोग का परचेज ट्रेंड बनेगा, और ये एक ड्राइविंग फैक्टर बनेगा ईवी मार्केट्स का इमर्जिंग इकोनॉमीज में। आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए इलेक्ट्रिक कार्स की ग्लोबल आउटलुक के हवाले से, कि कौन सी कंट्रीज ज्यादा कार्स बनाता है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, किन चीजों के ऊपर कंपटीशन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इंटरनल कंबस्टन इंजन की जो कार्स हैं उसके दरमियान क्या प्राइस डिस्पैरिटी है इन चाइना, यूरोपीय यूनियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और दीगर रीजन्स की। ये भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक कार्स की सेकंड हैंड मार्केट किस तरह फ्लरिश करेगी और किस तरह एक ड्राइविंग फैक्टर बनेगी इन compelling the company to offer good prices and market in the countries that have low economies or they are emerging economies countries. अगली वीडियो में हम दूसरे सेगमेंट जैसे कि लाइट ड्यूटी ट्रक्स, हैवी ड्यूटी ट्रक, बसेस और बहुत सारे फैक्टर्स को तफसीलन देखेंगे। इस तमाम डिस्कशंस के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि चाइना इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है इन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, और इमर्जिंग इकोनॉमीज सेंट्रल एशिया में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, साउथ अमेरिका में हो, वहां पे अपने बेसिस भी बना रहा है ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी ज्यादा हो और उसको एक्सपोर्ट सेंटर में कन्वर्ट किया जाए मुस्तकबिल में। चाइना इन सब चीजों का एपी सेंटर कैसे बना? क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा तेजी के साथ पॉपुलर हो रहे हैं। उनमें इलेक्ट्रिसिटी की कम प्राइसेस, इंतहाई अच्छे फीचर्स और एक स्टेट लेवल के ऊपर सपोर्ट और एक एम्बिशंस कि हमने लीड करना है ग्लोबल इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेगमेंट में।
तभी तो चाइना हर साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इतने मॉडल निकालता है जितना दुनिया भर मिलके भी नहीं प्रोड्यूस करता। तो चाइना is looking that it will be the flag bearer of electric vehicle segment in the world। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने ख्यालात से और फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इलेक्ट्रिक कार की सेगमेंट के हवाले से अगर आप कुछ और मालूमात दरकार हैं और आप इसके हवाले से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया भर में काम कर रही हैं या उसके कोई टेक्निकल फीचर्स के बारे में, कुछ कंपैरिजन के बारे में, तो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।